Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. Today our topic is energy changes and उसमें we'll mainly do past paper questions, but उससे पहले थोड़ा सा हम topic को review कर लेते हैं. So energy changes, as you know, it is basically uh, two different ways of which we categorize the reactions. एक वो reactions होते हैं जिनमें energy is given out. एक वो reaction होते हैं जिनमें energy is taken in. बट इट्स नॉट एज सिंपल. हमें लगता है कि बस एनर्जी बाहर आ रही है, एनर्जी जा रही है, बट व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग इन देयर इज दैट दिस एनर्जी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये काइनेटिक एनर्जी होती है. और व्हेन इट इज अब्जॉर्ब तो वो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसका मतलब है टेम्परेचर कम हो जाता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर. तो अगर काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसका मतलब है वी से कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसका एक कूलिंग इफेक्ट है. समटाइम्स वो रिएक्शन होता है, समटाइम्स वो प्रोसेस होता है. जैसे कि इवेपोरेशन में एनर्जी इज अब्जॉर्ब टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और उसकी वजह से टेम्परेचर फॉल करता है. बट जब आप कोई रिएक्शन करते हो, जैसे कि व्हेन यू ईट लाइक कोई मेंथॉल वाली कोई चीज़ आप खाते हो, सो दैट ऑल्सो अब्जॉर्ब्स एनर्जी, उससे भी टेम्परेचर कम होता है, बट दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. सो थोड़ा सा फर्क है. अगर फोर्सेस ब्रेक डाउन हो रही हैं तो दैट इज लेटेंट हीट, और अगर इट इज़ द रिएक्शन हैपनिंग तो दैट इज डेल्टा एच, और वो हमें इंथैल्पी के फॉर्म में नजर आ जाता है. ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. लेट मी क्विकली गो ओवर देम. सो इट सेज दैट केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज गिवन आउट इज एक्सोथर्मिक, मतलब हीट एग्जिट कर रही है, एंड व्हेन एनर्जी इज टेकन इन दैट इज एंडोथर्मिक. और दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही है. होता क्या है, बॉन्ड्स होती हैं, उनको तोड़ना पड़ता है और न्यू बॉन्ड्स क्रिएट करनी पड़ती हैं. तो अगर आपके पास जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनको आप तोड़ेंगे नहीं तो आपके पास एटम्स फ्री नहीं होंगे कि वो नई बॉन्ड्स क्रिएट कर सकें. सो उसको पहले तोड़ना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यानी कि एनर्जी नीड्स टू बी अब्जॉर्ब टू ब्रेक द फोर्सेस. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्सेस, बट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन मेकिंग द फोर्सेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनफैक्ट एग्जामिनर 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछता है कि हाउ इज समथिंग बीइंग एक्सोथर्मिक रिलेटेड टू के बॉन्ड्स टूट रही हैं, बन रही हैं. सो यू हैव टू टॉक अबाउट कि एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन इज अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स मेकिंग इज रिलीज्ड. और जो ज़्यादा होगी, मतलब अगर ज़्यादा रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है बॉन्ड्स मेड की एनर्जी ज़्यादा है और बॉन्ड्स ब्रोकन की एनर्जी कम है. इसी तरह अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो बॉन्ड्स ब्रोकन की एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि आपको ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है टू ब्रेक द फोर्सेस and or bonds that you have, and कम energy release करनी पड़ी. So that is the main idea here. Now if a reaction is exothermic, overall मैंने आपको explain कर दिया कि उससे more energy is required in making the forces and less in breaking the forces. अच्छा, अब होता क्या है कि हम इसको represent कैसे करते हैं, डेल्टा एच से. डेल्टा एच के बारे में ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, but a couple of important things. The activation energy is the minimum energy required to start a reaction, and that energy is always going to be positive, क्योंकि वो required है, वो absorb होनी है. डेल्टा एच ऑपोजिट होता है. डेल्टा एच है कि एनर्जी रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा अब्जॉर्ब होती है. सो एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड डेल्टा एच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो वेरी करता है. इसी तरह अगर एक रिएक्शन रिवर्स कर देते हो आप तो उसका डेल्टा एच रिवर्स होता है, एक्टिवेशन एनर्जी उसकी अभी भी पॉजिटिव रहती है. हाँ, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन उसकी ओवरऑल जो साइन है वो पॉजिटिव है, बिकॉज नो मैटर वेदर यू डू एन रिवर्सल रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, एनर्जी इज ऑलवेज अब्जॉर्ब टू ब्रेक द फोर्सेस. तो इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डेल्टा एच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर एक रिएक्शन कंबशन है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, बैकवर्ड में पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी. और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन चेंज नहीं होता. सो डू यू गेट इट? एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स करो तो वैल्यू चेंज होती है, साइन नहीं होता. डेल्टा एच रिवर्स करो तो साइन चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती. दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर दिस. सो डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक में होगा. ये डायग्राम जो है ना, दिस इज अ वेरी इजी वे फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. सो इफ यू लुक ओवर हेयर, so you start at some value, some reactant that you're starting at, and you're ending at some product. Similarly यहाँ पे भी आप किसी reactant से start कर रहे हो, किसी product पे end कर रहे हो. फर्क ये है
कि इसमें प्रोडक्ट नीचे है, उसकी वैल्यू कम है एनर्जी की और रिएक्टेंट की ज़्यादा है. सो ओवरऑल रिएक्टेंट ने एनर्जी लूज किया टू गेट टू प्रोडक्ट. सो विल से कि इसने एनर्जी हैज़ एग्जिटेड. So energy is lost. So we say that this is exothermic. Now on this side, we have reactant gaining energy to get to this point. And this is positive delta H. This is endothermic. Notice कि जब भी मैंने endo या exo देखा है, I have not cared about anything else but reactant and product. Which also means, and this is another very important point, products and reactants are the only things that can affect delta H. इसका मतलब है कि आप catalyst use करो, delta H को फर्क नहीं पड़ना. Because delta H does not depend on how the reaction happened, the delta H depends on what the reaction is. सही? But ये जो pathway है, ये delta H को फर्क नहीं पड़ सकता इससे, but activation energy को इससे फर्क जरूर पड़ता है. Activation energy, as you can see, it is from the reactants to the highest point. जैसे यहाँ पे reactants and to the highest point. And this activation energy will change. अगर आप आज catalyst use कर लेते हो तो उससे क्या होगा कि आपकी यही डेल्टा एच यही एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करके इस तरह का कोई कर्व बन सकती है. इन दिस कर्व योर एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर देन दिस. आप देख सकते हो कि यहाँ से ये एक्टिवेशन एनर्जी है कंपेयर टू द ओरिजिनल वन. सो ये हम कहेंगे कि कैटलाइज्ड रिएक्शन है, लेकिन डेल्टा एच डज नॉट चेंज. These are some fractions of crude oil जिनको हम यूज करते हैं as fuel, and this is something you need to memorize. A couple of important things here is कि down the group the molecular size MR and size increases. जिसका मतलब क्या हुआ कि van der Waals forces also get stronger. और जब van der Waals force strong होगी तो melting point and density they will both increase. So that's another important point when it comes to these fuels. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम इनको वन बाय वन सेपरेट कर लेते हैं. द सेकेंड मेन आइडिया अबाउट एनर्जी चेंजेस इज बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. जितनी भी एनर्जी अब्जॉर्ब करके कोई भी बॉन्ड टूटी है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं. नाउ बॉन्ड एनर्जी इज गोइंग टू बी, अस्सलाम वालेकुम दानिया, अस्सलाम वालेकुम अनीक. बॉन्ड एनर्जी इज गोइंग टू बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. तो मतलब बॉन्ड एनर्जी भी हमेशा पॉजिटिव होगी और ये हर बॉन्ड की डिफरेंट होगी. मतलब कार्बन की अगर दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो उसकी एनर्जी और है, और इफ इट इज अ डबल बॉन्ड तो उसकी एनर्जी और है. सो दैट्स हाउ इट गोज. सो वी हैव अ फ्यू वैल्यूज हियर एंड नोटिस दैट द यूनिट्स आर किलो जूल्स पर मोल. जूल्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो जूल्स फॉर लार्ज वैल्यूज हम यूज करते हैं, एंड पर मोल मीन्स कि वन मोल को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो क्या बनता है. सो वन मोल ऑफ दीज बॉन्ड्स अब्सॉर्ब 413 किलो जूल्स ऑन एवरेज. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट. A next question is that why is energy released when bonds are made? So to understand that, you can use the illustration of clapping. If these are two atoms and I bring them close together, so I have like when they bonded together they release a lot of energy, and when they are bonded together and I want to separate them तो मुझे energy उसमें लगानी पड़ी है. So that's one way to visualize कि अच्छा energy is released when bonds are made and energy is absorbed when bonds are broken. ठीक है, let's look at these. So calculation में आप क्या करते हो? You just look at the bonds that are broken and the bonds that are made, और उन दोनों को आप माइनस कर देते हो. So these are the bonds that are broken. So इसका मतलब है कि ये एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी. तो 4 हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड्स हैं, इनको आपको ब्रेक करना है. सिमिलरली यू हैव 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, सो इनकी डबल बॉन्ड है जिसको आपको ब्रेक करना है. सो दीज आर द बॉन्ड्स दैट आर ब्रोकन. सो यू कैलकुलेट देयर एनर्जी कि अच्छा 4 टाइम्स CH बॉन्ड इज 413, सो 4 टाइम्स दैट इज दिस मच. सिमिलरली ये दो हैं, इनको आप ब्रेक डाउन करते हो 990 आता है, ऐड करते हो, आपको पता चल जाता है कि अच्छा ओवरऑल इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करानी है. नाउ एट द सेम टाइम इसी रिएक्शन को करते हुए व्हेन दीज बॉन्ड्स आर बीइंग मेड, दैट मीन्स के यू हैव 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स. नोटिस दैट एवरी वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स. तो हर बॉन्ड को हम देखेंगे. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड has 2 carbon oxygen double bonds. So हम उनकी energies को add करते हैं, we get this. Bond making
is exothermic, so वो negative होगा. Bond breaking is endothermic, so वो positive होगा. You add them up, you get your overall value. अगर आपकी overall value negative है, इसका मतलब है energy released is more and energy absorbed is less. And that's exactly what happened in this case, which is why we use methane as fuel. It absorbs energy. और इसका ग्राफ हमारे पास ये वाला होगा. Alright, so let's get down to some questions and see how we can solve the questions that are here. Okay. The equation represents the reaction between two gases to form compound XY. Notice कि इसने equation हमें दे दी है. We don't need to worry about कि X क्या है, Y क्या है. The energy profile diagram is shown. This clearly shows कि this is exothermic. ठीक है? और आप देख सकते हो कि delta H is this. Activation energy is this. तो ये इसने E क्या है? E हाँ reverse की activation energy हो सकती है. So E can be the reverse की activation energy. ठीक है? क्योंकि अगर मैं इधर से ऐसे आता हूँ, so ये मेरी activation energy होगी और ये मेरा delta H होगा. अब ज़रा compare करके देखिएगा that the delta H, the activation energy of backward and forward have different values, but they're both up. And delta H has the same value for the reverse and the forward, but they have different sign. Okay, let's look at the problem. Which statement about this reaction is correct? The reaction is exothermic. C. The activation energy is equal to E. Activation energy of the backward reaction is E. लेकिन वो तो उसने बोला नहीं है. Enthalpy change is E. नहीं है, B नहीं है. Total energy needed to break bonds, which is this much, is greater than total energy released in breaking bonds, making bond. वो ये है. So clearly this one is bigger. So that's not going to happen. Which statement about endothermic reactions are correct? Endothermic reactions when energy is overall absorbed because energy required to break reaction is higher and energy required in releasing is lower. Okay. In endothermic reaction, energy is absorbed from the surroundings. That is correct. Temperature falls. Yes, that is correct. क्योंकि energy है kinetic energy. वो कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो temperature fall कर जाएगा. So 1 and 3. There you go. The diagram shows the energy profile of a chemical reaction. Again, you can clearly see कि ये हमारे पास activation energy है, ये हमारे पास delta H है, and this is endothermic from there because delta H is positive. Which row is correct? अब हमें forward का अगर पता है ना तो हमें backward का भी पता है. The reaction that is endothermic कौन से वाला है? Forward, clearly. So forward, so इन दोनों में से कोई option होगी. And reaction with greater activation energy. Backward की अगर मैं activation energy देखता हूँ तो वो होगी ये, और उसका delta H होगा ये. So clearly activation energy is also greater for the forward. So D is my answer. Okay. Hello, I don't know your name, Magic House. Which statement about exothermic and endothermic is correct? Let's see. In an endothermic reaction, energy is used to break bonds, but no energy is released. No. In any reaction, energy is both absorbed and released. ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. Okay? So in an endothermic reaction, energy is released when bonds form, but more energy is used to break bonds. ये बात ठीक है उसकी. Because even though bonds break करने में energy जो लग रही है वो ज़्यादा है, तभी जाके तो वो endothermic हुआ. ठीक है? Alright. An energy profile diagram is shown. ठीक है, you can clearly see कि ये R जो है ये delta H है, ये negative है, activation energy ये है, और ये exothermic reaction है overall. देखिए मैं हर diagram को देख के तीन information फौरन उसमें से निकालता हूँ. What is the arrow R on the diagram represents? It is the enthalpy change of the reaction. Yeah, delta H. क्यों? Endothermic energy change यहाँ पे है नहीं. Activation energy मैंने label कर दी है. Energy taken in by the surrounding is also the activation energy. So इस वजह से delta H is the answer. The diagram shows the energy profile of a reaction. ये
एक ही रिएक्शन है, लेकिन look at this word route. The reaction is happening through two different routes, two different pathways. Yes, I will do paper 2 of chemistry as well. Don't worry. अभी मैं वर्कशीट्स कर रहा हूँ, टॉपिकल कर रहा हूँ, एंड उसके बाद हम फिर ईयरली पेपर्स करेंगे. Okay. Alright, let's look at this one. The diagram shows the energy profile for a reaction. ठीक है, ये reaction हो रहा है हमारे सामने. Which statement about this reaction are correct? First of all, notice the two routes, and there's only one thing that can affect the routes. That is catalyst. Catalyst lowers the activation energy. कैसे? By providing alternative pathway and remains unchanged at the end. And that is how it speeds up the reaction. So ये तीन बातें ज़रूरी हैं. It speeds up the reaction by providing alternative pathway. That pathway has lower activation energy. इसका मतलब क्या हुआ? कि activation energy can be changed by the pathway, by the catalyst. Delta H will not change. Be very clear about that. Activation energy can change because of catalyst, because of pathway. Delta H cannot. So let's see. यहाँ पे clearly this one is lower, so इसका मतलब है कि इसका activation energy जो है वो कम है, so ये catalyzed है. More energy is needed to break bonds than is released when new bonds are made. ये तो endothermic की बात होती है. And this one is exo. ये इसकी delta H है. ये इसकी catalyst वाली activation energy है. I'm going to write EA cat for that. And this one is the normal EA that it has. Route 1 and 2 give the same overall equation. Yes, catalyst does not show up in the chemical equation क्योंकि वो during the reaction तो कुछ कर रहा होता है, it gets involved, but at the end it remains unchanged. So this is true. Route 2 involves the use of catalyst. This is true. The reaction is exothermic. This is also true. 2, 3 and 4. Those are my options. Okay. Next question. A reaction is exothermic. Which diagram shows a correct energy profile for the reaction and correct enthalpy change? Exothermic की diagram हमें बनानी आनी चाहिए. It is like this. You end up at a lower level. The delta H is this. The activation energy is this. They have opposite directions. D. That's the correct one. ठीक है? A is correct, but for endothermic, we have an exothermic reaction. उसने बोला है कि ये exothermic है. Okay, let's look at the next question. Under certain conditions, nitrogen reacts with oxygen to form N2O. The diagram is given. It's a reversible reaction. The energy profile diagram is shown. Okay. ठीक है. What's the activation energy of that reverse reaction? Reverse reaction में पहले तो मैं label कर लेता हूँ. So that is the activation energy that I have. And if this is X, then clearly X plus 164 equals 447. So I'll simply subtract them. So I get 447 minus 164. That gives me 283. And that is, you can see, positive. Why? Delta H is activation energy is always positive. There you go. D is my answer. The formation of liquid water from hydrogen and oxygen may occur in 3 stages. Okay. अच्छा, इस तरह की क्वेश्चन को देखने का बड़ा सिंपल तरीका है. आइडेंटिफाई कि आपके पास मॉलिक्यूल्स या लैटिस है और उससे वो एटम्स या एटम्स में अगर जा रहा है या आयंस में ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ब्रेकिंग बॉन्ड्स, सो दिस इज पॉजिटिव. एंड अगर वो वापस आ रहा है, यानी कि एटम्स से स्टार्ट कर रहा है, बॉन्ड्स क्रिएट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स लैटिस बन रहे हैं, दैट्स नेगेटिव. क्यों? बॉन्ड्स मेड एंड बॉन्ड्स ब्रोकन, इतना सा फर्क है इसमें. अगर ये रिवर्स की डायरेक्शन ज़्यादा होगी और ये कम होगा तो ऑब्वियसली एक्सो हो जाएगा. अगर फॉरवर्ड ज़्यादा है और बैकवर्ड कम है तो एंड हो जाएगा. सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मॉलिक्यूल्स हैं और उनसे वो एटम्स बना रहा है. सो दिस इज क्लियरली
मॉलिक्यूल से एटम बन रहे हैं, बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं, पॉजिटिव है, एंडो है. इस वाले में इट स्टार्ट्स एट एटम्स, एंड्स एज मॉलिक्यूल. So this is exo, bonds are being made. And this one is not a reaction because you have water on both sides, but you have gas going to liquid. So that is gas losing energy. So this is exo. So which is endothermic? One only. Dekho, right? Your question is how can we study chemistry O level to master the subject? I like that word mastery because I'm a strong proponent of mastery learning. Mastery learning is a technique that was popularized by Khan Academy. कि आप हर काम को तब तक करते हो जब तक आपको वो आ नहीं जाता. दैट्स द गोल. आपकी एज आपका गोल नहीं है कि इस एज में मुझे ये आना चाहिए. द गोल इज़ कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए. और उसको करने का तरीका क्या है? ओ लेवल्स या ए लेवल्स हो, सी आईज हो, इनफैक्ट दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है ना, जो आपके इस तरह के एकेडमिक एग्ज़ाम है, उनका फॉर्मूला एक ही है. यू स्टडी द सिलेबस, you do the topicals, and then you expose yourself to as many past papers as you can. There is no other way. But every student is at a different stage. डिपेंड करता है कि आपने सिलेबस कर लिया है तो अब आप टॉपिकल कर रहे हैं, या आपने टॉपिकल कर ली है, आपको वो प्रॉब्लम कर रही है तो आपने उसको कैसे देखना है. तो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट सिचुएशन. Let me know which stage you are at, and I'll be happy to help in there. Okay, question number 10. The energy profile diagram for the forward reaction of a reversible reaction is shown. ठीक है. अब वो कह रहे हैं for the reverse reaction, which row correctly shows the sign. So let's see. Reverse reaction में delta H की वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन चेंज होता है. और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू चेंज होती, साइन चेंज नहीं होता. ठीक है. So let's see. Sign of activation energy positive, and reverse direction में it will be exothermic. So D इसका आंसर है. Okay. Hydrogen is also produced when steam is passed over hot coke. Coke is another name for pure carbon. This reaction is endothermic. So मैं लिख लेता हूँ. This is clearly redox reaction because carbon is being oxidized, water is being reduced. और इससे हमारे पास दिस विल बी अ वेरी डेंजरस रिएक्शन बाय द वे, क्योंकि ये स्टीम है एंड इज प्रोड्यूसिंग अ वेरी एक्सप्लोसिव गैस. So this is pretty dangerous reaction. Anyways, on the axis below, draw a label diagram for the reaction to show this. Okay, so it's an endothermic process. We'll start at the reactants and end at a product, or product reactant से ऊपर होंगे. Now you can draw this. बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह सर्कुलर सी डायग्राम बना देते हैं, बट रिमेंबर कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है. आप ऐसे भी बना सकते हो, और अगर आपने कोई और बनानी है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी बना सकते हो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता शेप से. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपकी शेप की डायरेक्शन कैसी है, एंड दैट यू शो इट कि लेबलिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए. ठीक है. So this should start at the reactant, and this is activation energy, and this also should start here from the reactants, and this is my enthalpy change. So delta H, and I will connect it here just to show कि ये वहीं से start करें. I also have to label the reactants and products. So this is my reactant, and this is my products. Now one thing you can do is कि आप reactants and products की बजाय ये भी लिख सकते हो, and that's fine, but it's up to you what you write and what you don't. Like each of these is perfectly fine. Okay. When aluminum is heated in chlorine, aluminum chloride is formed. Aluminum chloride is a very interesting compound because ये metal से बना हुआ है, लेकिन इसमें covalent bonding है. ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी एक बात है, और यही हमारे सिलेबस में एक ही ऐसा कंपाउंड है जो एग्जाम में 2-3 दफ़ा उसने जिक्र किया उसका. द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ओके, नेगेटिव डेल्टा एच. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. 2 मार्क्स. सबसे पहले तो हम इसका रिलेशन डेवलप करेंगे कि भाई बॉन्ड्स का एनर्जी से ताल्लुक क्या है. सो विल टॉक अबाउट कि देखें जी, बॉन्ड
making is exothermic and bond breaking is endothermic. ये हमने relation establish कर दिया, 1 mark. Next we are going to talk about कि overall ये particular reaction exothermic क्यों है. So that's obviously because ये जो bond making वाला portion है ये ज़्यादा है और ये कम है. So that's what we'll say, that energy absorbed in bond breaking is less than energy released in bond making. And that's how I know. Iman, can you elaborate what exactly do you mean by what happens to activation energy? Do you mean here? Activation energy, I shown it as like starts at reactant, goes to the higher point. Okay. The equation for the decomposition of hydrogen peroxide is shown below. Okay. अब इसने क्या किया, in this question it's relating moles with the question, but you have to understand कि अगर उसने बोला है कि ये 1 मोल की है तो हमने सिर्फ देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है. वो he says a sample containing 1 mole of hydrogen peroxide, जो कि ये चीज़ है, releases 98 kilojoules. So 1 mole releases 98 kilojoules. Okay, so let's first see कि 1 mole का mass कितना है. So there are multiple ways of solving this question. मैं आपको 2 methods से करके देता हूँ. पहले मेथड ये करूँगा कि मैं इसका MR निकालूंगा. So MR of H2O2 is going to be 2 plus 32 34. और MR in grams मुझे बताता है 1 मोल कितना होता है. So मैं कह सकता हूँ कि 1 मोल अगर 98 किलो जूल्स देता है तो इसका मतलब है 1 मोल होता ही 34 ग्राम्स है और वो दे रहा है 98 किलो जूल्स. So 680 ग्राम्स जो है वो x देगा. I'll cross multiply it out. 34x is equal to 98 times 680. मेरी एक आदत है कि मैं कैलकुलेशन लिखता जाता हूँ और एंड पे कैलकुलेटर में डालता हूँ, बिकॉज दैट वे आई डोंट हैव टू अप्रॉक्सीमेट एंड आई ऑल्सो थिंक आई मेक लेस मिस्टेक्स. सो इस वजह से मैं इसको ऐसे ही रखूँगा. तो 34 टाइम्स 20 हो जाएगा एंड 91960 if I'm not wrong. That is the, like, we can confirm. $98 times 680 divided by 34. Yeah, yeah. So that is one way. Another way that we can do is कि आपने ये अगर नहीं करना तो आप पहले मोल्स निकाल लो. आप देख लो कि जी 680 ग्राम्स को 34 से डिवाइड कर लो, ये बन जाता है 20 मोल्स. So अगर 1 मोल 98 कर रहा है तो 20 moles will be 98 times 20. So that's again 1960. So it all comes down to what you are more comfortable with. Method से फर्क नहीं पड़ता as long as you're talking about and you're showing everything that's there. Any method is fine. दोनों में आपने MR कैलकुलेट करना ही करना है. Okay. Use ideas about bond breaking and bond forming to explain why the decomposition of hydrogen peroxide is exothermic. Exactly the same question as this. फर्क नहीं पड़ता कौन सा रिएक्शन है, as long as एक्सो है या एंडो है, यही मेन चीज यही है. The energy profile diagram for decomposition of hydrogen peroxide is shown. हमें नजर आ रहा है कि this is my delta H, नेगेटिव है. This is activation energy, positive है. Okay. Identify the energy changes. We just identified them. Change A is enthalpy and change B is activation energy. अच्छा, when the examiner says identify, so इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप नाम लिखें, उसका सिंबल लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों acceptable हैं. I'm sorry, Iman, you will have to specify which question you're talking about. Let me just go back. Is this it? This is question number 11, by the way, and this is question number 10. Question number 10 में उसने enthalpy change के बारे में पूछा था. So what happens to activation energy? Activation energy gets reduced. Forward में activation energy ज़्यादा होती है in this case, and backward में it is less. But I'm not sure. You have the worksheet. Just let me know which question in the worksheet you need help in. Okay.
the rate of decomposition of hot H2O2 is greater than that of cold H2O2. So the key difference is the hot one and the cold one. So obviously that's not a surprising case for us because the hot H2O2 has more energy. और उसकी वजह से दो तरीके हैं इसको आंसर करने के. एक तरीका क्या है कि यू टॉक अबाउट के हाउ द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, बट आई डोंट थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट अ रिवर्सिबल रिएक्शन हियर. या सो वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट. द अदर ऑप्शन इज के at high temperature it has more energy, so there's more particles with enough activation energy, so the collisions are more successful. Okay, so that's what we'll say, that a greater proportion of hot H2O2 particles have activation energy than cold H2O2 particles. Remember, particles can never be hot or cold. They can only have higher or lower kinetic energy. लेकिन H2O2 तो hot और cold हो सकता है ना. तो जब वो hot है तो उसके particles के पास high energy है, जिसकी वजह से the number of particles जिनके पास activation energy है वो ज़्यादा है, और cold में the number of particles with activation energy कम है. So there is higher frequency of successful collisions. Okay. Ethanol is used as fuel. The complete combustion of 1 mole releases 1350. So 1 mole, when it burns, it releases 1350 kilojoules. Of course, that is negative. और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि this is my 1350 kilojoules per mole. That's another way of looking at it. And equation also has 1 mole. तो मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा H भी यही होगा. देखिए मुझे एक ही चीज़ से कितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है. A sample of ethanol reacts with excess oxygen. Excess क्यों? इसका मतलब है कि you ignore oxygen. ठीक है? Makes 0.24 dm cube of carbon dioxide. Calculate the energy released. Okay, so first of all, what do I know? I know how much energy 1 mole releases. तो इसका मतलब है अगर मुझे यहाँ पे moles का पता चल जाएगा, मुझे पता लग जाएगा how much energy is released. लेकिन मेरे पास moles ही नहीं है. So for that I will have to rely on this. So carbon dioxide ये है, ethanol ये है. Let me relate them. So first of all, let me figure out the number of moles of carbon dioxide. So that is 0.24 divided by 24. So 0.01, I think. यही होगा. That's how many moles of carbon dioxide I have. Now if you look over here in the equation, 1 mole produces 2 moles of carbon dioxide. तो और मेरे पास तो 0.01 of carbon dioxide है. तो ये x हो जाएगा. Cross multiply. 0.01 is equal to 2x. X is going to be 0.005 moles. ये है moles of ethanol. तो अब मेरे पास moles of ethanol है, मुझे पता है एक मोल 1350 देता है, तो 0.005 will multiply with 1350 and that will give me whatever my answer is. .75 kilojoules. That's what I got. Notice the steps. First of all, I used this to figure out moles of ethanol, and then I multiplied it by molar energy volume, या molar enthalpy volume, enthalpy value, not volume. And yeah, we are done with this question. One other kind of question that they usually ask us about is the bond energy calculation. मैंने आज की जो हमारी क्रैश कोर्स की क्लास थी उसमें ऑक्टेन के बारे में, जो फ्यूल में हाई ऑक्टेन होता है ना, तो उसकी एंथैल्पी चेंज के बारे में बात की थी. तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग देयर, एंड इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन feel free to share that with me, or if there's a topic that you want me to do in the coming days, do let me know and I'll be happy to help. Again, thank you so much for watching. It has been a pleasure. And if you haven't subscribed, subscribe, and do refer your friends, because I want to help as many students as I can. Thank you so much.